Hello students, welcome to my YouTube channel Integrated Physics Studies IPS. एथरे मु ऑलरेडी प्लस 2 सेकंड ईयर सिलेबस कंप्लीट कर सारछि एबे मु प्लस 3 सीबीसीएस ऑनलाइन क्लासेस रो वीडियोज गुडा अपलोड करिवि जदि भल लागिला ताले लाइक कर देबो एवं सब्सक्राइब कर देबो जो वीडियोज गुडा मु अपलोड करिवि तार नोटिफिकेशन पई एठी बेल आइकन को ऑल रे सेट कर देबो गोटे इंपोर्टेंट जिंस वीडियोज रो ऊपर एठी जो 3 डॉट्स देखुछो तार क्वालिटी एठी देखो बाय डिफॉल्ट 360 अछि तमे ताकू पढे मध्ये परिबो एठी एडवांस रे क्लिक करी तमे रिजोल्यूशन बढ़े परिबो प्रति वीडियोज रे मु पीडीएफ लिंक देबी ताकू एठी ड्रॉप डाउन लिस्ट रो तमे क्लिक करी डाउनलोड मध्ये करि परिबो पीडीएफ को लास्ट रे एठी जो मोर चैनल नेम अछि याकू क्लिक करी तमे एठी प्ले लिस्ट को जाई मु प्रति वीडियोज को यूनिट वाइज एज पर सिलेबस सजाई की रखिथिबी तमे सर्च करि परिबो ओके थैंक यू हेलो स्टूडेंट्स आज रो टॉपिक रे हमें कैरेक्टराइजेशन ऑफ नानो मटेरियल्स एटा गुटे नुवा यूनिट स्टार्ट करिबा एथरे आज हमें एक्स-रे डिफ्रैक्शन विषय रे पढिबा तेबे ता पूर्वरु यार बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट रे कैरेक्टराइजेशन कहले कोन बुझिबा आगो सो एक्चुअली इट इज एन इंपोर्टेंट स्टेप फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड कंट्रोलिंग द सिंथेसिस of nanomaterials and their application. Okay, so nanomaterial actually कहले केवल गोटे टाइप रो मटेरियल नुह देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ nanomaterials. So तार फैब्रिकेशन आ कैरेक्टराइजेशन जो अच्छी माने को हिसाब रे हमें याकू डिजाइन करिबा एक्चुअली इट इज नॉट दैट इजी ओके बिकॉज बहुत ही स्मॉल टिनी पार्टिकल्स एटा सो it is very difficult and a great challenge for the scientists and researchers because of numerical application of different types of nanomaterials. Numerical application कहीं कि आमे जेमती देखुथिला जे सपोज गोटे नानो पार्टिकल बा नानो मटेरियल सेटा गोटे प्रॉपर्टी शो करूची जे ऑप्टिकली सेटा तार चेंज करूची प्रॉपर्टी को आ गोटे नानो पार्टिकल सेटा तार प्रॉपर्टी मैग्नेटिक हिसाब रे चेंज होउची आ गोटे पार्टिकल इलेक्ट्रिकली चेंज होउची आ गोटे पार्टिकल तार कंडक्टिविटी चेंज करूची ओके सो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ नानो पार्टिकल्स एंड दे हैव वेरियस टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज सो ताको जदि आमे एकाठी करी की फैब्रिकेट करिबा बा डिजाइन करिबा इट इज नॉट दैट इजी आ ता छडा सेकंड डिफिकल्टी हला एमानकर जो साइज टा भी बहुत छोटो एक्चुअली खाली आखिर तो आमे याकू देखि परिबानी बिकॉज ऑफ देयर स्मॉल साइज जार ऑर्डर रोची 1/100th पार्ट ऑफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट माने विजिबल लाइट रो 100 भाग रु भागे यार साइज टा सो यू कैन नॉट सी विथ द नेकेड आई ओके सो याकू देखिबा पई हमें लाइट यूज करिबा एंड वी यूज अ हाई रिजोल्यूशन ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप ओके आउ पुणी ता सहित एई जो नानो मटेरियल रो सैंपल को हमें लिक्विड सैंपल नेबा ओके अंडर सर्टेन कंडीशन रे याको हमें देखि परिबा राइट नाउ एई सब नानो पार्टिकल्स को देखिबा पई तेणु हमें किछटा स्पेशलाइज्ड टेक्निक को यूज करिबा ओके एंड दीज टेक्निक्स आर नथिंग बट योर कैरेक्टराइजेशन टेक्निक्स ओके एई टेक्निक को यूज करी हमें जानी परिबा पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन इन द मटेरियल ता सहित सरफेस मॉर्फोलॉजी को हिसाब रे से पार्टिकल गुडा गढ़ाई को हिसाब रे सरफेस टार स्ट्रक्चर अच्छी राइट देन इंटरफेस वॉल्यूम रेशियो देन बैंड स्ट्रक्चर एंड लैटिस कांस्टेंट्स एटसेट्रा राइट सो ए नानो पार्टिकल बा नानो मटेरियल रो कैरेक्टराइजेशन इट कैन बी डन यूजिंग अ वेराइटी ऑफ टेक्निक केवल गोटे टेक्निक नहीं बहुत प्रकार टेक्निक अच्छी एंड दीज टेक्निक can be classified into two categories गोटे हला डायरेक्ट डिटेक्शन टेक्निक आ गोटे हला इनडायरेक्ट डिटेक्शन टेक्निक सो फर्स्ट डायरेक्ट डिटेक्शन टेक्निक रे कोन करा जाय इट इंक्लूड्स योर SEM स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी तापरे TEM ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी देन AFM एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी ओके तापरे आसुची स्कैनिंग टनेलिंग माइक्रोस्कोपी STM सो ए जते सब कैरेक्टराइजेशन टेक्निक आमे देखिला which are under the category of direct detection technique so they can image the nanoparticles and they can directly measure their sizes particle distribution surface morphology and interface information ए सब जिनस को ये डिटेक्ट बा मेजरमेंट नहीं पारिबो and these techniques are effective to obtain the basic information about the
नानो पार्टिकल्स। ये गला फर्स्ट कैटेगरी। सेकंड कैटेगरी आउची इनडायरेक्ट डिटेक्शन टेक्निक व्हिच इंक्लूड एक्स-रे डिफ्रैक्शन, जोटा आज आम पढ़ा सर्टकट रे याकू XRD कहा जाए। किंबा आ गोटे एग्जांपल होची न्यूट्रॉन स्कैटरिंग NS। So it is जो X-ray diffraction technique, actually it is useful to know the crystal structure and the lattice constant of the nanoparticles. Our neutron scattering technique, actually it is helpful to reveal the photon modes in the materials. Okay, so ये है basic introduction about the characterization of nanomaterials, right? Now let us study आज जो topic X-ray diffraction। जेमती कहली X-ray diffraction by XRD, this technique is the indirect detection technique, and it is a very important tool for the study of crystal structures and atomic spacing. So actually it is based on the constructive interference। ना रु जना पड़छि जे एठी X-ray रो multiple interference हबो which will give rise to diffraction, right? So constructive interference हबो गोटे मोनोक्रोमेटिक माने सिंगल वेवलेंथ रो X-rays आमे नेबा आ ताको आमे हिट करिबा ऑन ए क्रिस्टलाइन सैंपल। Okay, the schematic diagram of this X-ray diffraction system is shown in this figure। देखो एठी फिगर रे आमे देखुछु एठी X-ray आसुची गोटे मोनोक्रोमेटिक X-ray beam एठी आसिला। ओके, तापरे एठी अछि देखो गोटे स्लिट भलिया अछि। ओके, so X-rays which are produced by the cathode ray tube एठू ए स्लिट जोटा कि नेरो ओपनिंग अच्छी। ओके, एठू ये फिल्टर हबो सो दैट आमे पाइबा गोटे मोनोक्रोमेटिक एक्सरे बीम। ओके, तापरे एई एक्सरे बीम को आमे इंसिडेंट करेबा हमरो जो क्रिस्टल देहरे, राइट? एंड these monochromatic x-rays are collimated and concentrated, right, and directed towards the crystalline sample। so crystalline sample रे जेतेबेले ये हिट करिवो, actually this crystalline sample is acting as a three-dimensional diffraction grating। okay, diffraction grating भलिया ये काम करिवो for these x-ray wavelengths, and this is very similar to the spacing of planes। जेमती प्लेन गुडार स्पेसिंग रही था तुम जिते ब्रैक्स डिफ्रैक्शन पढ़ुल। ओके, से भाया एठी काम करिवो ए जो क्रिस्टलटा, राइट? So the interaction of the incident X-rays with the crystalline sample will produce constructive interference। ए जगह रे हिट करिकी constructive interference हेबो। Now we apply the condition of your Bragg's law, according to which 2d sin theta equal to n lambda, right? Where d is the interplanar spacing, theta is the angle of diffraction or the diffraction angle, and lambda is the wavelength। n ही गला ऑर्डर, एटा तमे जानी छो। सो एबे देखो ए इक्वेशन रो आमे जानिबा को पाउछु जे the wavelength lambda of the X-rays are actually depending upon two factors। number one, the diffraction angle theta or the angle of diffraction theta। number two, the interplanar spacing or lattice spacing small d in the crystalline sample, this one। okay, now these diffracted X-rays are then detected and processed, and thereafter they are computed। एटा देखो ए पटे जीवो। ओके, आफ्टर डिफ्रैक्शन एठी अछि एक्स-रे डिटेक्टर। ओके, सो एठी ए एक्स-रे गुडार प्रोसेसिंग हबो, डिटेक्शन हबो आउ कंप्यूटिंग हबो, राइट? नाउ ऑल पॉसिबल डिफ्रैक्शन डायरेक्शंस of the crystal lattice can be attained by scanning the sample through a range of angles 2 theta। ओके, ए सैंपल को आमे ए हिसाब रे स्कैनिंग करिबा थ्रू एन एंगल 2 थीटा सो दैट आमे सबु जेते पॉसिबल डिफ्रैक्शन डायरेक्शन पाई परिबा, राइट? नाउ द क्रिस्टल कैन बी आइडेंटिफाइड बाय द कन्वर्शन ऑफ डिफ्रैक्शन पिक्स टू द डी स्पेसिंग। ओके, देखो एठी जो डी स्पेसिंग कहूची माने एठी स्मॉल डी जो इंटरप्लानर और लैटिस स्पेसिंग अछि ताकू ये मीन करूची। सो ए क्रिस्टलाइन सैंपल जो आमे नउचू ता पई एटा गोटे पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ डी देखेइबो। सो डिफरेंट
sample, different crystalline sample will have different values of this small d. Okay, and each type of crystal has a set of unique spacing, right? So it is जो crystalline sample आमे नहीं ता छोड़ा आमे semi crystalline sample मध्य नहीं परिबा, or in fact we can also take amorphous sample, but provided condition हला this should be in the nano scale, right? So that ताको आमे एबे analyze करि परिबा by using this technique which is known as XRD, that is X-ray diffraction technique, right? Now the dimension and sizes of these crystallite, actually these are the fundamental characteristics of the nanomaterials, and they are useful to understand and control the bulk properties. Okay, small crystallite sizes actually produce broad band diffraction pattern. Broad band माने एठी जो pattern टा आसीबो एमती multiple peaks आसीबो. Okay, narrow band means single peak आसीबो, right? So एई जो peak आमे पाइला diffraction peaks ताको आमे analyze करि परिबा, so that we can get information about the crystalline size and other aspects like your lattice distortion due to the composition, or micro strain variation and faulting can be obtained from the analysis of these peak shapes, right? A X-ray diffraction technique जो अछि, it provides an adaptable technique actually for measuring the crystalline phases, degree of crystallinity, okay, तापरे material structure ranging from polymers to glass ceramics. Okay, so जो crystalline phase रे अछि ताकू ये मेजर करि परिबो, केते डिग्री जाए तार क्रिस्टालाइनिटी को मेंटेन करछि ताकू ये मेजर करि परिबो, ता छडा से जो स्ट्रक्चर मटेरियल रही तार रेंज को मध्य ये मेजर करि परिबो, स्टार्टिंग फ्रॉम पॉलीमर टू ग्लास ceramics, right? Also this X-ray diffraction can provide technique for measuring the crystalline orientation. आज यदि हमें crystallites को देखिबा in a fabricated structure, they are actually oriented as a design feature or as a characteristics of the processing technology. So nanoscale orientation कौन करिवो, it can affect the performance of the product. So that यदि हमें एबे orientation distribution देखिबा of teeny nanometer thick platelets which are on the surface of a polymer film, then याको आमे measure करि परिबा by using this X-ray diffraction technique or XRD technique, and this indicates the alignment with the film surface which can have a major effect on the surface properties of the polymer. So आमे एथि पई यूज करिबा गोटे formula known as your scalar formula, according to which beta equal to k lambda by d cos theta, where beta is the integral breadth of a reflection which is located at angle 2 theta. Capital K higala scalar constant whose value is nearly 0.9. Lambda hochi wavelength of X-rays. Then capital D higala average crystalline size. ଆଉ theta higala ethi angle of diffraction or diffraction angle. So এই जो formula हमें देखिला, it has been named from the name of a scientist Scarer. He observed that if the size of the crystalline sample is small, जदि आमे छोटो साइज रो crystalline sample नौचु ताले जो आमे diffraction pattern पाइबा, that line will be broadened. Okay, so this scalar formula is relating the crystallite size with that of your broadening. So एटी आमे गोटे example हिसाब रे X-ray diffraction pattern नेचु of a sample which is copper nano powder. एटी आमे x axis रे 2 theta को नेचु in terms of degrees, y axis रे counts को नेचु, so that we are getting peaks जोटा distinct peaks एटी तक तीनटा देखिया को पाउछ. एटी 111 200 ଆଉ 220 এই पोजीशन रे आछि. एटा सब होउछि HKL, which is nothing but your Miller indices. So each peak of the diffraction pattern is assigned with a particular value of Miller indices, that is HKL, to index a power diffraction pattern. So in this way X-ray diffraction विषय basic knowledge तमे जानिलो. ता सहित आउ टिके जदि डिटेल स्टडी या विषय करबा को चाहूछ, एटा आउ गोटे बही रु मु नेछि. देखो एटी एक्सरे क्रिस्टालोग्राफी विषय रे टिके बुझेछि, जोथिरे कि हमें जदि इन्फॉर्मेशन जानिबा को चाहूछु रिगार्डिंग द मीन पोजीशन ऑफ द एटम्स इन द क्रिस्टल and their chemical bonding and disorder etc. So एटी lambda को से relate कला with that of the energy of the X-rays in keV.
तापर यूज कला ये ब्रैक्स रिफ्लेक्शन कंडीशन विच इज 2d sin थीटा इक्वल टू n लैम्बडा तापर देख इनसीडेंट जिते होची एक्सरेटा है यही फिगर तुम ऑलरेडी पढ़ीच सॉलिड स्टेट फिजिक्स रे ओके ये हिसाब रे इनसीडेंट होगी डिफ्रैक्टेड बीम ये पटे गला सो दिस इज द एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन थीटा accordingly we are getting the Bragg's condition that is 2d sin theta equal to n lambda एठी जो d होची इंटरप्लानर स्पेसिंग जार वैल्यू है a बाय स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस l स्क्वायर h k l होगला जमती कहली मिलर इंडिसेस सो the relative amplitudes of X-ray lines from different crystallographic planes will help in identifying the type of the structure okay so ये विभिन्न टाइप स्ट्रक्चर केमती पिक्स रॉर्डिंगली तार भैल्यू यहाँ देती यू कैन स्टडी इट फॉर योर नॉलेज पर्पस तापर देख ये मेथड गोटे देला डिबे स्केरर मेथड ओके सो ये आम कौन करुचु ना जो एंगल अच्छी डिफ्रैक्शन एंगल ताकू आमे बाहर करुचु ब्रैग एंगल विच इज थीटा इक्वल टू s बाय 4r s होची डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉरेस्पोंडिंग रिफ्लेक्शन ऑन द फिल्म आउ आर होगला रेडियस ऑफ द फिल्म सिलिंडर सो यही मेथड रो एडवांटेज ये कहूँ जे all the Bragg angles can be determined simultaneously by exposing the powder sample with the X-ray beam only once. So ये फिगर रे देख इंसिडेंट एक्सरे बीम ये पटो आसुची ये गोटे छोट नेरो ओपनिंग रखीचु तापरे एटा इंसिडेंट होची गोटे पाउडर सैंपल उपरे सो दैट वी आर गेटिंग कोनिकल शेप डिफ्रैक्टेड रेज ओके सो यही डिबे स्केरर मेथड रो एडवांटेज आउ समराइजेशन ये लिखी अगेन मुझे कहबी यहाँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर नॉलेज तुम्हें पढ़ी पार जदि डिटेल जानवा को चाहूच देन ये रोचे इनक्रीज इन विड्थ ऑफ XRD पिक्स दैट इज एक्सरे डिफ्रैक्शन पिक्स रो आमे विड्थ केमती इनक्रीज करि परिबा सो एथि आमे यूज करिबा गोटे टेक्निक दैट इज FWHM which is known as full width at half maximum ओके सो ये आम इंटेंसिटी को जदि नेबा एज कंपेयर्ड विथ द डिफ्रैक्शन एंगल ताले सपोज पिक आम यही हिसाब रे पाइला सपोज मैक्सिमम वैल्यू इंटेंसिटी रोचे I0 यार अधा वैल्यू होगा I0 बाय 2 सो ये I0 बाय 2 रे ये पिक रो विड्थ जति रहिबो दैट इज योर FWHM राइट सो ये जो पिक रो ब्रॉडनिंग जो रोचे तार दुईटा सोर्स रही था ओके फर्स्ट है इंस्ट्रूमेंटल ब्रॉडनिंग ओके because the broadening may be from an imperfect diffractometer second है sample broadening so broadening may be from an imperfect sample okay so यही दुई विषय रे भी देखो ये ब्रीफली लिखा है इंस्ट्रूमेंटल ब्रॉडनिंग देन योर ब्रॉडनिंग ड्यू टू द सैंपल इम्परफेक्शन यहाँ भी तुम सेल्फ स्टडी करि पारो ओके आ शेष रे ये स्किरर फॉर्मूला जोटा ऑलरेडी आमे देखिला ओके दिस इज योर स्किरर फॉर्मूला टाउ इक्वल टू के लैम्बडा बाय बीटा कॉस थीटा आमे सही जगह रे देखुतला बीटा इक्वल टू के लैम्बडा बाय डी कॉस थीटा ओके जस्ट टिके सिंबल एपट सेपट अच्छी देन फाइनली हाँ यहाँ डिसऑर्डर ऑफ सेकेंड काइंड ओके डिसऑर्डर ऑफ सेकेंड काइंड एक्चुअली जो एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न जो देखुच तार ब्रॉडनिंग जो होची सेटा केतरा फैक्टर ऊपर डिपेंड करे प्रथम फैक्टर है फाइनाइट साइज ऑफ द क्रिस्टल सेकेंड फैक्टर ये कहूँ द फ्लक्चुएशन दैट कॉज द कोरिलेशन दैट इज द इंटरैक्शन बिटवीन द नियर बाय एटम्स इन ऑर्डर टू डिक्रीज विथ द इंक्रीज इन द सेपरेशन ओके सो दैट एटा पिक रो ब्रॉडनिंग करि थाए ओके एंड दिस इज नोन एज द डिसऑर्डर ऑफ योर सेकेंड काइंड ओके सो एठी कॉन्स्टेंट रहिबो पिक हाइट जदि आमे मल्टीप्लाई करिबा फुल विड्थ एट हाफ मैक्सिमम ताले यार वैल्यूटा कॉन्स्टेंट रहिबो सो याकू आमे जदि यूज करिबा ताले एक्चुअली स्किरर इक्वेशन जो अछि दैट इज बेस्ट फिटेड to the first peak because the disorder of second kind affects the first peak the most. So ये फिगर रे देखो इंसिडेंट एक्सरे बीम ए पटो आसुची एटी गोटे छोट नेरो ओपनिंग रखीचु तापरे एटा इंसिडेंट होची गोटे पाउडर सैंपल उपरे सो दैट वी आर गेटिंग कोनिकल शेप डिफ्रैक्टेड रेज ओके सो यही डिबे स्केरर मेथड रो एडवांटेज आउ
समराइजेशन ये लिखी अगेन मु कहबी एटा जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर नॉलेज तुम्हें पढ़ी पार जदि डिटेल जाना चाहूच देन एठी रोची इंक्रीज इन विड्थ ऑफ XRD पिक्स दैट इज एक्स-रे डिफ्रैक्शन पिक्स रो आमे विड्थ केमती इंक्रीज करि परिबा सो एथि पई आमे यूज करिबा गोटे टेक्निक दैट इज FWHM व्हिच इज नोन एज फुल विड्थ एट हाफ मैक्सिमम ओके सो एठी आमे इंटेंसिटी को जदि नेबा एज कंपेयर्ड विथ द डिफ्रैक्शन एंगल ताले सपोज पिक आमे ए हिसाब रे पाइला सपोज मैक्सिमम वैल्यू इंटेंसिटी रो होची I0 यार आधा वैल्यू हे गेला I0/2 सो ए I0/2 रे ए पिक रो विड्थ जति की रहइबो दैट इज योर FWHM राइट सो एठी ए जो पिक रो ब्रॉडनिंग जो रोची तार दुईटा सोर्स रही था ओके फर्स्ट है इंस्ट्रूमेंटल ब्रॉडनिंग okay because the broadening may be from an imperfect diffractometer second है sample broadening so broadening may be from an imperfect sample okay so এই দুই বিষয় भी देखो এটি briefly লেখা হয়েছে instrumental broadening then your broadening due to the sample imperfection এটা भी তুমি self study करि पारो okay आ शेष रे एटी स्किरर फॉर्मूला जोटा ऑलरेडी आमे देखिला ओके दिस इज योर स्किरर फॉर्मूला टाउ इक्वल टू के लैम्बडा बाय बीटा कॉस थीटा आमे सेही जगह रे देखुतला बीटा इक्वल टू के लैम्बडा बाय डी कॉस थीटा ओके जस्ट टिके सिंबल एपट सेपट अछि देन फाइनली हाँ इटा डिसऑर्डर ऑफ सेकंड काइंड ओके डिसऑर्डर ऑफ सेकंड काइंड एक्चुअली जो एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न जो देखुछ तार ब्रॉडनिंग जो होची सेटा केतरा फैक्टर ऊपर डिपेंड करे प्रथम फैक्टर है फाइनाइट साइज ऑफ द क्रिस्टल second factor एठी कहूची the fluctuation that cause the correlation that is the interaction between the nearby atoms in order to decrease with the increase in the separation okay so that peaks गुडार broadening करि थाए माने तार width को बढ़ाई थाए so ए disorder को आमे कहिबा disorder of second kind right so आमे प्रथमे जो देखिला finite size effect एटा जदिओ peaks रो broadening करूची किंतु तार height को किछि भी affect करूनी किंतु disorder of second kind height को भी कमे दउची along with broadening right ता छडा full width at half maximum यार वैल्यू इंक्रीज करे एज द स्क्वायर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द पिक दैट इज द स्क्वायर ऑफ द वेव वेक्टर q आ प्रोडक्ट जदि आमे देखिबा पिक हाइट आउ FWHM रो इट इज फाउंड आउट टू बी कांस्टेंट राइट सो दुईटा फैक्टर आमे देखिला फाइनाइट साइज आउ डिसऑर्डर ऑफ सेकंड काइंड फाइनाइट साइज टा हाइट को किछि भी इफेक्ट करूनी ब्रॉडेनिंग केवल करुची किंतु डिसऑर्डर ऑफ सेकंड काइंड ब्रॉडेनिंग करबा सहित हाइट को भी कमे दोची आउ स्किरर इक्वेशन जो अछि इट इज बेस्ट फिट और बेस्ट अप्लाइड टू द फर्स्ट पिक बिकॉज डिसऑर्डर ऑफ सेकंड काइंड टा तार जो इफेक्ट देखैबो फर्स्ट पिक रे तार इफेक्ट टा सबठु कम रही थाए राइट सो एई शेष पर्याय रे हम जो देखिला अबाउट द एक्स-रे डिफ्रैक्शन एटा तमे फॉर द सेक ऑफ योर नॉलेज तमे डिटेल जदी जानिबा को चाहूचो तमे एटा को सेल्फ स्टडी करि पारो राइट थैंक यू।